Hello everyone. So exams are approaching and you're worried about your English exam. Don't worry, I'm here with a series in which I will teach you all the topics of grammar. Yes, you're listening that right. I will teach you one by one every topic of English and that is totally free of cost. You just have to watch me on my channel and daily I'm going to upload a new grammar topic for you. So this is for the preparation of your exams so that the children who find English difficult so that they can do that by themselves with the help of my videos, so they can prepare English in a very good way at their home without going anywhere. So today I'm going to start from tenses first of all, because tenses are the most important part of English. So if you understand tenses, then you half of the problem will be resolved. So we are going to start from tenses in a very simple way. I'm going to teach you tenses. So first of all, I will ask you that tenses होते क्या हैं? What are the tenses? Okay, so tenses वो है जैसे कि हम बोलते हैं कि मैंने ये काम कल किया था, मैंने अपना स्कूल का होमवर्क कल किया था, या फिर मैं कल को करूँगी. सो इन हिंदी वी यूज टू यू किया था, करूँगी. फ्रॉम दैट वी कम टू नो दैट कि हमने वो काम कर लिया कि अभी करना है. बट इन इंग्लिश हाउ विल वी कम टू नो कि वो काम कर चुके, कि अभी कर रहे हैं, कि अभी करना है? फ्रॉम द टेंस. सो टेंसेस क्या है? टाइम. It tells you time when the work is done, or if it is done, or if you will do it in future. So on the basis of the time, tenses are divided into three categories, that is present, that is past, present and future. So tenses तीन तरह का होते हैं. जो काम हो चुका, that is past. जो अभी चल रहा है, means to say we cannot say अभी चल रहा है, that I will explain you for further कि present में क्या होता है. So you can say जो अभी चल रहा है. And future, that will come in the future, जो अभी आना है. So in three categories you will divide the tenses, and these three categories will further divide it into four categories, that is simple, or it is also called as indefinite, and continuous, perfect and perfect continuous. So each part have these four parts, like past, simple past, past continuous, past perfect continuous. In the same way we can say simple present, present continuous, present perfect continuous, and future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So every tense have its different rule, its different usage, and it is used for the different time period that we will do one by one in this series. So I'm going to start from simple present now. So firstly, simple present use कब होता है? When you will use simple present or present indefinite, you can say. Okay, so this is used for habitual actions. What is called as habitual actions? क्या होते हैं? जो काम आप हर रोज करते हो. आप कौन से काम हर रोज करते हो? जैसे कि हम स्कूल हर रोज जाते हो, आप हर रोज आप दूध पीते हो, चाय पीते हो, और आपके पेरेंट्स चाय पीते हैं हर रोज. सो वट एवर द वर्क वी डू ऑन द डेली बेसिस, और वट एवर वी हैव द हैबिट टू डू ऑन द डेली बेसिस, दैट actions included in simple present. To represent that actions, like I drink tea every day, I go to school every day. So to represent these actions, for the habitual actions I will use simple present. For second is for universal truths. यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं? जैसे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है. So this is universal truth, and this was truth in the past. This is truth of the present, and this will remain truth for the future also. No one can change that. So for the universal truths that nobody can change, for that you will use simple present tense. For example, the earth revolves around the sun. So here to tell this thing we are using simple present tense. नेक्स्ट इज ट्रू एट प्रेजेंट. जो चीज इस समय सही है, जो इस समय सच है. लाइक इफ यू से आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, सो आई लिव इन इंडिया. So like this, these are the facts that are true at this time. So for that you will use simple present tense. And to show possession also, like if you want to say कि मेरे पास दो pencils हैं, then you will say I have two pencils. So this sentence is also in simple present tense. That I will explain you in detail, that how you can categorize different types of sentences into simple present tense. Now comes a rule. So here comes a rule.
So what is rule of that is the most important thing, that what is the rule of simple present tense that you have to memorize. So its rule is subject plus v1 plus v1 is verb, first form of verb, plus s or es plus object. So I know that you are already familiar about forms of verb, जैसे कि go, went, gone. I'm just taking one example. So yes, sorry. So like go, went, gone. Go, went, gone. So in this, go is the first form of verb, went is the second form of verb, and gone is a third form of verb. In simple present tense we use first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम, जैसे कि इसमें हम गो यूज करेंगे इफ वी हैव टू यूज गो इन द सेंटेंस. सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल फॉर दैट, लाइक आई go. So this is I is subject here. So I used I as a subject. Go is first form of verb plus I go to, sorry, I go to school every day. So जो काम हम हर रोज करते हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सो अब ए एस और एस का क्या रूल है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस टेंस. सो अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, and we is a plural subject, they is a plural subject, or we can say boys, girls, students, there are so many, so animals can be there, so many. So if any plural subject you are using, so उसके साथ आप verb को as it is लगा दोगे, there is no need to put s or es with that. So अगर subject plural है तो जो verb है वो भी plural होगी. In English I want to say you कि verbs, जैसे कि हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं इंग्लिश में, जैसे कि एक बॉय को हम कहेंगे बॉय, लेकिन ज्यादा एक से ज्यादा बॉय को कहेंगे हम बॉयज, बॉयज. तो वैसे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब्स भी सिंगुलर प्लूरल होती है. यस. सो जैसे कि गो, जो गो वर्ब है, एंड गोज, गो एंड गोज, तो इसमें उल्टा होता है. जैसे कि इसमें बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, लेकिन इसमें गोज सिंगुलर है और गो प्लूरल है. तो जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके साथ हम बिना एस और एस लगाए वर्ब यूज करेंगे. सो बिना एस और एस लगाए वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि हमने आई गो टू स्कूल एवरी डे ऐसे यूज किया. सो विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स यू विल यूज प्लूरल वर्ब्स विदाउट एस और एस. सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि अज्यूम करो आई एम राइटिंग शी हियर, शी इज सिंगुलर, सो यू हैव टू पुट एस और एस विद द वर्ब, विद द वर्ब. सो वर्ब क्या है, गो, तो गो के साथ ई एस लगेगा, गोज, शी गोज टू स्कूल एवरी डे. सो इसकी जगह अगर कोई भी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होगा, जैसे कि इट, ही, किसी का भी नेम, रिया, so any singular subject we can say, so with that you will use s or es with the verb. So this is the main rule of simple present tense, like if the subject is plural you will use the verb without s or es, and if the subject is singular you will use the verb with s or es. So here, as it is clear, so I hope it is clear to all of you. So if you have any query, you can ask me in the comment section. I will surely reply you. Now comes how to change these into negative and positive. Sorry, in interrogative. So if you have to change these sentences into negative, simple present tense into negative, like I go to school every day. जैसे कि हमने ये सेंटेंस किया, I go to school every day. तो इसको हम हाउ विल यू चेंज इनटू नेगेटिव. नेगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें नॉट यूज होता है, कि इसको नॉट के साथ कैसे कहना है. जैसे कि मैं हर रोज स्कूल नहीं जाती, अगर मैंने कहना है कि मैं नहीं जाती हर रोज स्कूल, देन हाउ विल यू से दैट इन नेगेटिव सेंस. सो यू विल नॉट से आई गो नॉट टू स्कूल एवरी डे, दैट इज टोटली रॉन्ग. सो यू हैव टू यूज डू एंड डज फॉर दैट, डू एंड डज. सो जब भी आपने सिंगुलर यूज करना है सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ आप डज यूज करोगे,
और प्लूरल के साथ आप डू यूज करोगे. ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस किया था, आई गो टू स्कूल एवरी डे. So how will you change that into negative? Because I is plural, so we will write I. So after that, we will do add do. I do not. We have to add not to make a negative sentence. I do not, and go will come as it is. I do not go to school every day. So in this way, you can change the sentence into negative कि मैं हर रोज स्कूल नहीं जाती. So अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, दैट मीन्स इफ यू हैव टू चेंज दिस इनटू क्वेश्चन, क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो? सो हाउ विल यू आस्क दैट क्वेश्चन? या फिर यहाँ पे हमने आई यूज किया सब्जेक्ट, तो क्या मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ? सो इंट्रोगेटिव में, सो यू हैव टू ब्रिंग डू इन द बिगिनिंग. सो हाउ विल यू से डू आई गो टू स्कूल एवरी डे? Question mark. So this is its negative, this is its interrogative. Interrogative means to ask question. So how can you ask the question? So now if you have to change singular with the singular subject, if you have to change that into negative, like we did the statement, she goes to school every day. So now if you have to change this into negative कि वो हर रोज स्कूल नहीं जाती, अगर आपको ये बोलना है, how will you do that? Now firstly you have to check the subject, that is subject is she, that is singular. So with singular you will use does. So you will say she does not. तो हमने डू के साथ ऑलरेडी ईएस लगा दी, ईएस हमने ऑलरेडी ऐड कर दी, तो हम दो बार ईएस नहीं यूज करेंगे. तो हमें जो गोस के साथ ईएस लगी हुई है वो हमें हटानी पड़ेगी. तो जब भी हम डज यूज कर लेंगे तो आपको गो लिखना है सेंटेंस में. शी डज नॉट गो, यू विल से गो, यू विल नॉट राइट गोज हियर, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. सो शी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. So this becomes a negative of with the singular subject. And how will you change into question? So this is negative. अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या वो हर रोज स्कूल जाती है, अगर आपने ये कहना है, how will you change that? So in the same way जैसे कि हमने do आगे लेके गए थे, हम यहाँ पे does आगे लेके जाएंगे. So आप कहोगे does she so go. Again you have to change goes into go because we are using does in the sentence. Does she go to school every day? Question mark. Don't forget to put question mark. It is of half mark. So if you forget to put a question mark, so you can lose half mark of yours. So it's very important to put question mark there. So this was about simple present tense. Isn't it easy? So if you have any query, if you find it something complicated, or if you think that something is not clear to you, you can ask me in the comment section. And if you want the practice sheets, I will provide you the proper practice sheets of simple present tense. And related to every topic, I have the sheets that are the, you can say the best sheets that you can get for the practice. So if you want that sheets, just type in the comment section sheets. I will share the link with you of the sheets. You're going to get it surely free of cost, so nothing to worry about. So this time you are going to rock in your exams. So now I'm just going to wind up my lecture here. So I'm going to give you a sentence, two sentences here that you have to share with me so that I can understand whether this is clear to you, whether you understand this properly or not. Like she runs every day. Now you have to change this sentence into negative. She runs every day. So वो हर रोज भागती है. So you have to change this into negative. So here you will write negative. You can type this its answer into comment section
and I will tell you whether you're doing that in the right way or a wrong way, okay? And the second sentence is they run every day. So this also you have to change into negative. Both the sentences, just try to change into negative. This will be a short practice for you, and I will also come to know that whether you understand this or not. So that's all for today. Bye bye for the next time.